Bismillahirrahmanirrahim. Unit 2, His First Flight, page 23. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. नन्हा समंदरी बगला तन तनहा अपने चट्टानी घर में बैठा हुआ था। उसके दो भाई और एक बहन एक दिन पहले उड़ चुके थे। वो उनके साथ उड़ान भरने से डरता था। ताहम उसने जब भी किसी न किसी तरह छोटे कदमों के साथ चट्टान के किनारे की तरफ बढ़ने और परों को फड़फड़ाने की कोशिश की तो वो डर गया। नीचे वसी समुंदर फैला हुआ था और नीचे रास्ता भी मीलों लंबा था। उसे यकीन था कि उसके पर उसे सहारा नहीं दे सकेंगे। बस वो गर्दन झुकाकर चट्टान के नीचे वाक़े छोटे से बिल की तरफ दौड़ा जहां उसने रात गुजारी। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wing and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his edge unless he flew away. Page 24. But for the life of him he could not move. हत्ता कि उसके दोनों भाई और छोटी बहन, जिनके पर उसके परों से बहुत छोटे थे, फड़फड़ा कर किनारे की तरफ उड़ चुके थे। वो छलांग लगाने का हौसला करने में नाकाम रहा, जो उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। उसके माँ बाप उसके पास आकर तेज़ आवाज़ से उसे पुकार रहे थे। वो उसे बुरा भला कह रहे थे और उसे धमका रहे थे कि अगर वो ना उड़ा तो उससे उसकी चट्टान पर भूखों मरने दिया जाएगा। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी की खातिर उड़ भी न सका। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. 24 घंटे पहले की बात थी। उस वक्त से लेकर अभी तक कोई उसके पास नहीं आया था। एक दिन पहले सारा दिन वो अपने वालिदैन को बहन भाइयों समेत उड़ते हुए देख चुका था, जो उनकी परवाज़ की महारत सिखा रहे थे और इन्हें ये बता रहे थे कि लहरों के ऊपर कैसे गुजारा जाता है और मछली पकड़ने के लिए गोता कैसे लगाया जाता है। दर हकीकत तो अपने बड़े भाई को मछली के पहली शिकार पकड़ते और हड़प कर खाते हुए देख चुका था, एक चट्टान पर खड़े होते हुए, जबकि उसके वालिदैन फ़ख्री आवाज़ें निकालते हुए चक्कर लगा रहे थे और उसका पूरा ख़ानदान सुबह के वक्त दरमियान में नीचे मुकाबिल वाक़या चट्टान पर जा चुका था और उसे बुज़दिली के ताने दे रहा था। The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Page 25. Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. Now there was not a single scrap of food left. He had searched every inch, rooting among the rough, dirt-caked straw nest where he and his brother had been hatched. He even gnawed at the dried pieces of spotted eggshell. It was like eating part of himself. अब आसमान पर सूरज तुलू होकर ऊपर चढ़ रहा था और उसकी चट्टान को हरारत दे रहा था, जिसका दहाना जनूब की तरफ था। उसने गर्मी महसूस की क्योंकि गुज़श्ता रात ही उसने कुछ भी नहीं खाया था। फिर उसे चट्टान के आखिरी सिरे पर मैक्रेल मछली की खुश्क दुम मिली। अब खुराक का मामूली सी टुकड़ा भी बाकी नहीं रहा था। वो खुश्क तिनकों से बनी गंध घोंसले की एक इंच की तलाशी ले चुका था, जहाँ पर वो और उसके बहन भाई पैदा हुए थे। हत्ता कि उसने अंडों के धब्बेदार खुश्क खोलों को भी कतर कतर कर दिया था। ये ऐसा था गोया कि वो अपने जिस्म के ही किसी हिस्से को खा रहा हो।
He had then trotted back and forth from one end of the ledge to other, his grey body the colour of the cliff, his long grey legs stepping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to fly. But on each side of him the ledge ended in a sheer fall of precipice, the sea beneath, and between him and his parents there was a deep wide chasm, and above him he could see nothing. The precipice was sheer, and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. फिर वो आगे पीछे दौड़कर चट्टान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चहलकदमी कर चुका था। उसका खाकसतरी जिस्म, जो कि चट्टान का भी रंग था, उसके लंबे खाकसतरी रंग के टांग नफासत और नज़ाकत के साथ ज़मीन पर पड़ रहे थे, ये कोशिश करते हुए कि वो उड़े बग़ैर किसी न किसी वालिदैन के पास पहुँचने का रास्ता मालूम करे, लेकिन उसके दोनों इतराफ़ चट्टान बहुत अमूदी थी। पेज 26। और नीचे समंदर वाक़या था, और उसके वालिदैन के माबैन एक गहरा और वसी खलीज हाइल था, और अपने सर के ऊपर वो कुछ भी नहीं देख सकता था। ढलवान नहायत अमूदी थी, और इसका आखिरी सिरा शायद नीचे समंदर से भी ज़्यादा दूर था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He was his two brothers and his sister lying on the plateau dozing, with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her back on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way. Scraping his beak now and again to wet it, he uttered a low cackle. His mother cackled too and looked over at him. वो आहिस्ता आहिस्ता चट्टान के किनारे की तरफ आया और एक टांग पर खड़े होकर और दूसरों को परों के नीचे छुपाकर उसने एक आंख बंद कर दी, फिर वो दूसरी बंद कर दी और ऐसे जाहिर किया कि गोया वो सो रहा है। फिर भी उन्होंने इसे कोई तवज्जो न दी। उसने अपने दोनों भाई और बहन को देखा जो उभरे ज़मीन पर पड़े ऊँघ रहे थे और सरों को गर्दन में छुपा दिया था। उसका बाप अपने कमर के सफ़ेद परों को संवार रहा था, सिर्फ माँ उसकी तरफ देख रही थी। वो सतह मरतफ़ा के एक छोटे उभरे सतह पर खड़ी थी और अपना सफ़ेद सीना बाहर को निकाला था। वो बार बार अपने पाँव में पड़े मछली के टुकड़े को चीर रही थी और फिर अपनी चोंच की दोनों तरफ से चट्टान से रगड़ कर साफ़ कर रही थी। खुराक के नज़ारे ने उसे पागल कर दिया। वो भी इसी तरह खुराक को चीरना पसंद करता था। पेज 27। और अपनी चोंच को तेज़ करने के लिए बार बार रगड़ता था। उसने आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ निकाली। उसकी माँ ने भी जवाबी नारा लगाया और उसकी तरफ देखा। गा गा गा, he cried, begging her to bring him over some food. Ga ula, she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so she uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, abreast of the ledge, she halted, her legs hanging limp, her wings motionless, the piece of fish in her bank almost within reach of his beak. गा गा गा, वो चिल्लाया, अपनी माँ से इल्तिजा करते हुए कि उसे कुछ खुराक खिला कर दे। गा उल आ, उसने जवाब में तदहीक अमेज़ चीख लगाई, लेकिन वो दर्दनाक अंदाज से चिल्ला रहा था। और फिर तकरीबन 1 मिनट बाद खुशी से नारा लगाया क्योंकि उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया हुआ था और इसे लेकर वो उसकी तरफ उड़ रही थी। वो बेकरारी के साथ सामने की तरफ झुका। उसके पाँव चट्टान पर पड़ रहे थे कि वो इसके करीब हो जाए, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके सामने पहुंची, चट्टान के बिल्कुल सामने, तो वो रुक गई। उसके पैर लंगड़ाते हुए लटक रहे थे और पर साकिन थे। उसके मुंह में मछली का टुकड़ा अब तकरीबन उसकी पहुंच में था। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, she dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. His mother had swooped upwards. As he passed beneath her, he heard the swish of her wings. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a moment. The next moment he felt his wings spread outwards.
Page 28. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air. हैरानगी में उसने एक लम्हा इंतज़ार किया, ये सोचते हुए कि वो क्यों उसके करीब नहीं आई, और फिर भूख से पागल होकर उसने मछली की तरफ छलांग लगाई। एक बुलंद चीख के साथ वो आगे और नीचे खला में गिर पड़ा। उसकी माँ ऊपर की तरफ उड़ी, और जो ही वो उसके नीचे से गुजरा तो उसने माँ की परों की सरसराहट सुनी। फिर एक शदीद खौफ ने उसको घेर लिया और उसके दिल साकित हो गया। वो कुछ सुन नहीं सकता था, लेकिन यह हालत चंद लम्हों के लिए थी। अगले लम्हे उसने परों को बाहर की तरफ फैलाते हुए पाया। हवा उसके सीने के परों से टकराई, फिर पेट के साथ और फिर परों के साथ। वो अपने परों के सरों को हवा को काटते हुए महसूस कर सकता था। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. He uttered a joyous scream and flapped them again. He soared higher. He raised his breast and banked against the wind. Ga ga ga, gaul ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. Then he saw his two brothers and sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर और नीचे की तरफ उड़ रहा था। अब वो खौफज़दा भी नहीं था, बस उसका सर थोड़ा सा चकराया। फिर उसने एक बार परों को फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ परवाज़ की। उसने खुशी से चीख मारी और दोबारा पर फड़फड़ाए। वो ऊपर उड़ता गया। उसने सीने बाहर को निकाला और अपने पर ऊंचे करके उड़ने लगा और गा गा की आवाज़ें निकालता रहा। उसकी माँ उसके करीब से गुजरी। पेज 29। उसके पर शोर मचा रहे थे। उसने एक चीख के साथ उसे जवाब दिया। फिर उसका बाप भी आवाज़ें निकालता हुआ उसके पास आया। फिर उसने दोनों भाइयों और बहन को अपने इर्द गिर्द उड़ते हुए, मुड़ते हुए, गोते लगाते हुए और ऊपर नीचे परवास करते हुए देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commenced himself to dive and soar and curvet, shrieking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and crowded amusedly. And around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He made his first flight. फिर वो मुकम्मल तौर पर यह बात भूल गया कि वो कभी उड़ने के काबिल नहीं था, और उसने तेज़ आवाज़ के साथ गोते लगाने, ऊपर उड़ना और उछलना कूदना शुरू कर दिया। अब वो समंदर के करीब था और उसके बिल्कुल ऊपर उड़ रहा था, और उसका चेहरा समंदर की तरफ था। उसने नीचे वसी साफ समंदर देखा और उसके ऊपर छोटी छोटी मौजें तैर रही थीं। उसने इधर उधर चोंच घुमाई और खुशी से आवाज़ें लगाने लगा, और उसके इर्द गिर्द उसका पूरा ख़ानदान आवाज़ें लगा रहा था, उसकी तारीफ़ें कर रहा था। उनकी चोंच उसे मछली के टुकड़े पेश कर रही थी। इसने अपनी पहली परवाज़ मुकम्मल कर दी। पेज 30। Comprehension. Question number 1. Why did young seagull have to join the company of his family? Answer. The young seagull was alone on his ledge. He was unable to make flight and search food for himself. It was necessary for him to join his family in the art of flight in order to save his life. Question number 2. Why don't his parents, his brother and sister give him food? Answer. His parents, his brother and sister did not give him food because they want to force him to make flight himself and search food for his survival. This was very necessary for his coming life. If he did not do this, he will remain dependent on his parents. Question number 3. What was the attitude of the family towards the young seagull? Was it agreeable to you or not? Explain. Answer. The whole family is very much indifferent towards the young seagull. They have left him in isolation and they are taunting him for his cowardice. He is sad and hungry. All this is agreeable for us because it is part of the training of children, and in this way they succeed in forcing him to fly. Question number 4. Describing in your own words the feeling, actions and thoughts of the young seagull soon after his fall. Answer. When the young seagull at last dived at the fish, he fell outwards with a loud scream. A huge terror seized him and his heart stood still. But this situation lasted for few moments. Then he uttered a joyous scream and began to flap his wings. He was then happy and satisfied. Question number 5. What could be the author's purpose behind writing the story, His First Flight? Actually, the author's purpose behind this story is giving a great important message that is very difficult to do something for the first time. But when someone takes the first step, it becomes easy for him. Nothing is impossible, but we need to take the initiative.
Question number 6. Compare and contrast the attitude of the family members before and after the flight. Before the flight, the whole family was angry with him. They had left him alone on his ledge. They were threatening him to let him starve unless he flew away. But after making the first flight, all of them were praising him and offering him scraps of dogfish. His parents were screaming with joy and pride. Question 7. Identify the sentence in the first paragraph which shows cause and effect. The cause and effect showing sentence is the following. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole. Question number 8. Read any paragraph from the text to identify the main idea and the sentences that support main idea. Answer. In the very first paragraph, it is said the young seagull was along on his ledge. He had been afraid to fly with them. It is main idea. The rest of the sentence supports this main idea, in which it is said that all of his brother and sister had already flown away. Page 32. He felt certain that his wings would never support him. He failed to muster up courage to take that plunge. His parents are upbraiding him for he would not move. Question number 9. Read the second paragraph of the text to identify transitional devices and state their function. Transitional devices are words that help carry a thought from one sentence to another or from one paragraph to another. Here some words like since, then, and in fact have been used as transitional devices. Vocabulary and grammar. A. Use dictionary to identify the pronunciation end of the following words with pronunciation key and then use in sentence. Answer. Gnaw. A white dog gnawed at a big bone. Monstrous. I saw a monstrous woman in the dark. Derisively. The young seagull screamed derisively. Plateau. There are many plateaus in Pakistan. Devour. He devoured half of the fish in one bite. B. Write the words related to cooking in front of their meanings. Answer. Mark with knife without cutting score. 2. Take skin of fruit vegetable peel. 3. Cut into cube dices. 4. Shake powder through a fine mesh net sieve. 5. Massage with hands knead. 6. Cook in hot water boil. 7. Turn heat down to heat slowly simmer. 8. Use implement to cut food into shreds grate. 9. Cook using hot oil in a pan fry. 10. Cut very roughly chop. 11. Stir ingredients together mix. Cut into thin slices like paper slice. Cook in oven without oil. Bake. Cook in oven with oil roast. Grammar. Write the correct collective noun in front of its meaning and then make sentences. Many insects, swarm. Many people, congregation. Many fish, shoal. Many ships, fleet. Many papers, bundle. Many rooms, many cards, deck. Many knives, set. Choose the correct verb. Mind the noun, singular or plural. 1. Ladies and gentlemen, here is the news. 2. Where is my jean? 3. Further information is available in the office. 4. The stairs are over there. 5. The furniture is uncomfortable. Page 34. 6. Pakistan is a very nice country. 7. Your sunglasses are on the table. 8. Homework is boring. 9. The scissors on the table are mine. 10. Physics is not easy. C. Use the following words and sentences once as a singular noun and then as a plural nouns. Ox, oxen. Roof, roofs. Potato, potatoes. Party, parties. Deer, deers. Chief, chiefs. Photo, photos. Series, series. Wife, wives. Brother-in-law, brothers-in-law. Life, lives. Family, families. Boy, boys. House, houses. City, cities. Man, men. Child, children. Sandwich, sandwiches. Nurse, nurses. Shelf, shelves. Ox. He is as strong as an ox. Oxen. The land was plowed by oxen. Roof. The rain is hammering on the roof. Roofs. In our country, houses are built of clay with flat roofs. Potato. She made potato salad. Potatoes. I like roasted potatoes. Party. Many people attended the farewell parties.
There are many political parties in Pakistan. Deer. I saw a deer in the forest. Deers. Deers are grazing in the meadow. Chief. Bajwa is chief of the army staff. Chiefs. All the department's chiefs attended the meeting. Photo. Paste the photo here on the front of the farm. Photos. 3 passport size photos are needed. Series. Artugrul is a new drama series. Wife. Aslam's wife and son were killed in the accident. Wives. The wives of the Holy Prophet ﷺ are role models for the present day women. Family. Joint family system is better. Families. Many families migrated to safer places. Boy. Salman Jan is a good boy. Boys. Boys are playing hockey. House. My house is not very damaged in the plane crash. A city. Lahore is a big city. Cities. Cities are more populated than villages. Man. He is a man of principles. Men. Many men and women died in the accident. Child. The woman gave birth to a male child. Children. The children are hungry. Sandwich. I ate a sandwich. Sandwiches. We ordered for sandwiches. Nurse. A nurse was tested positive for corona. Nurses. All the nurses of the hospital are on duty. Shelf. Put the book in the shelf. Shelves. Books are placed in the wooden shelf. D. Fill in the blanks with correct form of the given verb in parentheses. Think about whether the noun is singular or plural. This pair of sunglasses is parentheses B really expensive. I am not paying that much. 2. These scissors are parentheses B blunt. Get me another pair. Page 36. 3. The jacket you are wearing is really nice, but those green jeans are parentheses B horrible. 4. Physics is parentheses B the study of the natural world. 5. A lot of the news we hear on TV are parentheses B bad. It's so depressing. 6. The police is investigating parentheses investigate a break-in at the National Bank last night. 7. People are parentheses B always likely to tell lies to protect themselves. 8. Think carefully before you spend the amount of money. £1,000 is parentheses B a lot. 9. You should try walking so far just to find an open supermarket. 3 miles will parentheses tire you out so quickly, I am telling you. 10. They have exaggerated a little with that new swimming pool. Did you see the temperature of the water? 41 degrees is parentheses B too high. Translational devices. Transition words are used to link ideas within sentences and sentences within paragraphs. Used correctly, transition words make writing easier to understand and more mature. Try to identify transition words when you are reading, and when you have an opportunity, use these words yourself. A. Read each sentence carefully and choose the most appropriate transition to fill in the blank in the sentences. Capitalize when necessary. 1. You can use things you already have around the house for doll furniture. For example, a spool of thread can be used as a stool. Page 37. 2. I love pizza. Therefore, most days I eat it for breakfast, lunch and dinner. 3. The day seemed endless while we were working on our project, but finally the time came for us to set it aside for the day and go home. 4. Khan is very educated. He matriculated from high school and then earned a bachelor's degree from the local college. A few years later, he earned a master's degree. Furthermore, he is about to get his PhD in physics. 5. Gulmeena and I looked forward to being able to see each other next summer. Until then, we will write letters to each other. 6. I would really like to see you again. So will you join me on afternoon for lunch? 7. I wanted to go to the movies, but the tickets were already sold out. 8. We need to go to the store. However, we will stop at Rehan's house and pick up the hat I left there yesterday. 9. Dogs are not allowed in the mall, but the lady that works in the bookstore there brings her dog to work with her every day. 10. I studied very hard for the English test, but I barely passed it, and my studying efforts were unrewarded in math class. I wonder if I am not studying correctly. B. Create an original sentence or pair of sentences using the transitions indicated.
1. Meanwhile, she can come back to work when she is feeling better, but meanwhile, she should be rested as much as possible. Page 38. 2. For example, then he will be considered as victim, for example, in a robbery event. 3. Consequently, she did not like the pudding. Consequently, she threw it all away. 4. Without a doubt, he was without a doubt a very worst kind of reporter. 5. Therefore, I want to shift to Peshawar, therefore I may be granted school leaving certificate. Page 39, Unit 3, Good Timber Poem. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. वो दरख्त जिसने कभी भी धूप, आसमान, हवा और रोशनी के लिए जदोजहद नहीं की, बल्कि खुले हमवार मैदान में खड़ी रही और हमेशा अपने हिस्से की बारिश हासिल की, ये दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह यानी अहम और कीमती दरख्त ना बन सकी, बल्कि एक मामूली चीज़ की तरह जीकर मर गई. The man who never had to toil to gain and farm his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. वो इंसान जिसने कभी जदोजहद नहीं की कि वो इस ज़मीन के अपने कित्ते को हासिल करके इसमें काश्तकारी करे, जिसने अपना हिस्सा हासिल करने के लिए कोशिश नहीं की, धूप, आसमान, रोशनी और हवा का हिस्सा, ऐसा शख्स कभी भी कामिल इंसान ना बन सका, बल्कि वो पहले की तरह जी कर तरक्की किए बगैर मर गया. Page 40. Good timber does not grow with ease. The stronger wind, the stronger trees. The further sky, the greater length. The more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, in trees and men, good timbers grow. अच्छी इमारती लकड़ी आसानी से नहीं उगती, नशोनुमा पाती. ज़्यादा ताकतवर हवाएं, ज़्यादा ताकतवर दरख्त और दूर आसमान और ज़्यादा लंबाई, जितनी ज़्यादा तूफ़ान इतनी ज़्यादा ताकत. धूप, सर्दी, बारिश और बर्फ़ की बदौलत दरख्तों में और इंसानों में अच्छी खुसूसियात लाती है. Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches shows the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. जहाँ जंगल ज़्यादा घना होता है यानी गंजान होता है, वहाँ पर दोनों के सरदार पाए जाते हैं और वो सितारों से मशवरे करते हैं, जिनके टूटे हुए शाखें ज़ख्मों से भरे होते हैं. बहुत से तूफ़ानों के ज़ख्म और निशानात और ज़्यादा जदोजहद के दाग, ये ज़िंदगी का एक आम कानून और कायदा है. Comprehension. Page 41. Question number 1. What is the significance of the title of the poem Good Timber? The poet has beautifully used the title of the Good Timber to convey his message. The title itself shows the meaning and given us a clear message successfully. Good men and good timber have been compared with each other aptly, as we know that both do not grow easily into becoming important and beneficial for the society. Question 2. What is good timber? How does tree grows into good timber? Answer. Good timber is that which overcomes adversities and encounters stronger winds and unfavorable conditions throughout life. Then it becomes important, good and beneficial. When trees pass through sun, cold, hot weather, rain, snow, they grow and become good timber. Question number 3. What according to Douglas is the fate of those people who do not work hard in life? Those people who do not work hard, they cannot develop the social, moral and economic position. They live and die without any improvement. Question 4. How can a person achieve his true potential in life? Illustrate it with examples from the poem. A person can achieve his true potential by overcoming adversity. Hard work, unfavorable and difficult situations in life polish us and make us good human beings. If a person gets everything easily and without any efforts, he cannot become good. Page 42. And beneficial man. Such person lives his life and dies without gaining an improvement. The poet compares men with trees. Good tree is that which bears strong winds, rains and snow. Such is the case with men. Question 5. What is the central idea of the poem, Good Timber? Answer. The whole poem is an extended metaphor comparing trees to human beings. The central idea is that struggle is necessary to live a full, beneficial and perfect life. Question 6. Rhyme scheme of the poem.
The poem follows a consistent and structured rhyme scheme. The rhyme scheme is A-A-B-B-C-C. The poem has 4 stanzas, each following the same pattern. Question 7. Give the example of extended metaphor from the poem. The entire poem is an extended metaphor comparing trees with men. The poet says that people, like trees, grow and reach their true potential by facing and overcoming difficult situations in life. Question 8. What is alliteration? Give its example from the poem. Good Timber. Answer. Alliteration means the occurrence of same letter or sound at the beginning of consecutive words in a poetic line. There is alliteration in second line. Sun and sky, manly men, find the patriarchs and broken branches. Page 43. Vocabulary and grammar. Question number 1. Fill in the blanks with politics related words. 1. I would like to vote for your party, but I disagree with your politics on free trade. 2. The election was thrown into chaos when 2 of the polling stations were destroyed in fires and several ballot boxes went missing at the close of voting. 3. The opposition party won a large majority in the new parliament and the government accepted defeat. 4. The government lost the election because it had lost the trust of the electorate after more than a decade in power. 5. Despite being more than 5% behind in the most of the latest opinion polls, we are still optimistic of winning the election next month. 6. The Prime Minister was heavily criticized last month for giving the go-ahead to broadcast a campaign ad which personally attacked the leader of the opposition. 7. In the UK, any constitutional changes made by the government need to be approved in referendum. 8. Propaganda is usually used most frequently during a time of war as enemies use radio, TV and newsprint to attack each other's action and ideology. Page 44. Grammar. Use possessive determiner or the possessive pronoun in the blanks. 1. The bus stop is near our house. 2. How is your new school? 3. This is my bag and that is his. 4. Sophia's hair is longer than mine. 5. It's my turn now. 6. The bike on the right is yours. 7. Which desk is ours? 8. Here are her tickets. 9. The children brushed their teeth. 10. Our school is much nicer than theirs. B. Use the personal pronoun in the bracket in its subject or object form or as possessive determiner or a possessive pronoun. 1. We can phone my grandma and ask her. 2. Are they your friends? 3. She's working on her presentation. 4. Excuse me, can I ask a question? 5. They can ride their skateboards. 6. He is his friend. 7. This is not my jacket, mine was blue. 8. She bought it for herself. 9. These 2 cats are ours. 10. They don't eat potatoes because they don't like them. Unit 4, page 45, from Mother with Love. The day that Minta Hawley grew up was a crisp golden day in early September. Afterwards, she was to remember everything about that day with poignant clarity. She remembered the slapping sound the waves made, the pungent smell of the logs burning, even the gulls that soared and swooped overhead. But most of all, she remembered her father's face when he told her. वो दिन जब मिंटा हावले बड़ी हुई, वो सितंबर की इब्तिदा के करकरा सुनहरी दिन था. उसके बाद उसे नहायत वजाहत के साथ उस दिन से मुताल्लिक हर चीज़ याद रखना था. उसे मौजों की वो तेज़ आवाज़ें भी याद थीं, लकड़ियों के जलने की तेज़ बू और हत्ता कि उसे मुर्गाबियों के ऊपर उड़ने और चपटने की आवाज़ें भी याद थीं. लेकिन इन सब से ज़्यादा उसे अपने बाप का चेहरा याद था जब उसने उसे बताया. It began like any other Saturday, with Minta laying in bed an extra hour. Breakfast was always lazy and unhurried on Saturday morning. The 3 of them in the breakfast room, Minta's father engrossed in his paper, her mother flying around in a gaily colored house coat, mixing waffles and frying bacon, Minta setting the table. ये दिन भी किसी दूसरे हफ्ते की दिन की तरह शुरू हुआ, जबकि मिंटा 1 घंटा ज़्यादा वक्त के लिए बिस्तर पर पड़ी थी. हफ्ते की सुबह शाम नाश्ते देर से आता था. उनमें से 3 अफराद नाश्ते के कमरे में थे. पेज 46. मिंटा के वालिद अपने कागजात में मशगूल, उसकी माँ शोख रंग के कोट में इर्द गिर्द घूम रही थी. रोगनी नान और सुअर का गोश्त मिक्स करते हुए मिंटा दस्तरखान बिछा रही थी.
They talked the casual, happy talk of people who love each other and don't have to make conversations about neighborhood doings, about items in the paper, about the clothes Minta would need when she went away to school in a couple of weeks. वो उन लोगों की तरह बातें कर रहे थे जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं और गुफ्तगू नहीं करना चाहते। हमसायगी के मामलात के बारे में, अखबार में मौजूद ख़बरों से मुतल्लक़, मिंटा के कपड़ों के बारे में जब वो 2 हफ़्तों में स्कूल जा रही होगी। It was after the dishes were finished that Minta's father asked her if she would like to go down to the beach for a little while. Low tide, he said. Might get a few clams. नाश्ता करने के बाद मिंटा के वालिद ने पूछा क्या वो कुछ देर के लिए नीचे साहिल पर जाना चाहेगी। उसने कहा कि मौजें तेज़ नहीं तो शायद हम कुछ मछलियाँ पकड़ सकें। मिंटा nodded agreement, but her mother made a little face. Horrors, clam chowder for another week. Sure you wouldn't like to go, Mary? Minta's father asked her. The salt air might help your headache. मिंटा ने रजामंदी जाहिर कर दी मगर उसकी माँ ने मुंह बनाया। खौफ गाढ़ा शोरबा दूसरे हफ्तों के लिए भी। मिंटा के वालिद ने कहा यकीनन तुम जाना नहीं चाहोगी मेरी। नमकीन हवा शायद हमारी मदद करें, ये तुम्हारा मसला है। No, you two run along. I'll curl up with an apple and a television program. She yawned and stretched, looking almost as young as Minta. Minta ran upstairs and got into her heavy shoes and jeans. Shall I call Sally and ask her if she wants to go? She yelled, leaning over the banister. Page 47. नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं एक सेब खाऊंगी और टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम देखूंगी। उसने जमाई ली और ऊपर छत पर गई और अपने भारी जूते और जीन्स पहन ली। उसने आवाज़ दी कि क्या वो सैली को आवाज़ दे के पूछे कि वो जाना चाहती है कि नहीं। जंगले के ऊपर झुकते हुए उसने तेज़ आवाज़ दी। Let's just go by ourselves this time, her father answered rather shortly. He was silent as they drove toward the beach. It wasn't the companionable silence that Minta had come to accept from him. There was something grim about it. He is going to talk to me about school, Minta told herself. He is going to try to talk me out of it again. It was funny the way her father had acted when she announced her intention of going to Maryhill this term. It had always been such an accepted thing. Her mother had graduated from Maryhill and it followed that Minta should be enrolled there as a matter of course. उसके बाप ने जल्दी से कहा कि आओ इस दफ़ा सिर्फ हम दोनों चलते हैं। साहिल की तरफ जाते हुए वो खामोश था, लेकिन ये मिलनसारी की खामोशी नहीं थी बल्कि कोई संजीदा बात थी। मिंटा ने दिल में कहा कि वो मुझसे स्कूल के बारे में बात करने वाला है। वो मुझसे फिर से इसके मुतालिक बात करने की कोशिश कर रहा है। जब उसने इस बार मेरी हिल जाने का इरादा किया तो बाप का ये अंदाज़ा बहुत मुदहका खेज था। ये तो हमेशा ऐसी बात थी जो कबूल की जाती थी। उसकी माँ ने मैरीहिल से ग्रेजुएशन की थी और इस तरीके से के मुताबिक मिंटा को भी वहाँ दाखिल किया जाना चाहिए था। Last year was different. With mother just recovering from that operation, it was natural that he should accept Minta to stay home. She had even wanted to stay, but now going to Maryhill was something special. She would live in a dormitory and be part of all the campus fun. Page 48. It wasn't as if Maryhill were clear across the country. Either she had probably be getting home every month or so, and the 3 were the Christmas holidays and then spring vacation. गुज़श्ता साल मुख्तलिफ था, ऐसी माँ के होते हुए कि अभी भी इस मरहले से सेहतियाब हुई थी। ये फितरी बात थी कि उससे मिंटा से घर पर रहने की तवक्को करनी चाहिए थी। वो ठहरना भी चाहती थी, लेकिन अब मैरीहिल जाना बहुत ख़ास बात थी। वो हॉस्टल में रहेगी और कैंपस की खेल तमाशों में भी हिस्सा लेगी। ऐसा नहीं था कि मैरीहिल की पॉलिसी पूरे मुल्क में वाज़ेह थी, बल्कि उसे हर महीने घर आना होगा और क्रिसमस की छुट्टियां भी थीं और फिर बाहर की छुट्टियां भी थीं। Minta's chin was lifted in a stubborn line as her father parked the car and went around to get the shovels and pail from the trunk. It wasn't like him to be so stubborn. Usually he was jolly and easygoing and inclined to leave such matters entirely up to Minta's mother. मिंटा की थोड़ी ज़िद से ऊपर उठी जब उसके बाप ने कार खड़ी कर दी और संदूक से बेलचा और बाल्टी लेने के लिए चला गया। वो इतना ज़िद्दी भी नहीं था। अमूमन वो खुश मिजाज और तन आसान था और अक्सर इस किस्म के मामलात मिंटा की माँ के ज़िम्मे छोड़ता था। She followed him down to the beach, her boots squishing in the wet sand. The tide was far out and farther up the beach. She could see bent figures busily digging along the water's edge.
वो उसके पीछे पीछे साहिल की तरफ चलने लगी। उसके बूट तर रेत में हल्की सी आवाज़ पैदा कर रही थी। लहरें साहिल से बहुत दूर थीं और वो झुके हुए अफराद देख सकती थी जो कि पानी के किनारे के साथ साथ खुदाई में मसरूफ़ थीं। A scattered beach fire smoldered near the bank. Page 49. Minta poked into place and revived it with splinters of driftwood until she had coaxed back a steady warming blaze. When she sat back on her heels to smile up at her father, she felt her throat constrict with a smouldering fear. His eyes looked the way they had when पानी के किनारे मुंतशिर आग सुलग रहा था और मिंटा दरिया की लकड़ी के टुकड़ों से इसे ताज़ा करने लगी, यहाँ तक कि इसकी में आहिस्ता आहिस्ता शोहले जलने लगे। जब वो दबकी लगाकर बैठ गई और बाप की तरफ देखकर मुस्कुराई तो उससे खौफ की वजह से अपना गला घुटता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें भी उसी तरह दिखाई दी जब suddenly she remembered he was looking at her and trying to smile just the way he had looked at her the time her appendix burst and they were taking her to the hospital. She could almost hear the wail of the ambulance siren and feel the way he had held her hands tightly, trying to make it easier. His eyes had told her then, as they told her now, that he would 1,000 times rather bear the pain than watch her suffer. अचानक उसे याद आया वो उसकी तरफ देख रहा था और मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह जब उसकी अंतड़ी फट चुकी थी और वो उसे अस्पताल ले जा रहे थे। वो शायद एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ को भी सुन रही थी। वो उसे ऐसे भी महसूस हो रहा था जब उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और वो उस तकलीफ़ को आसान बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों ने उसे बताया था, जैसा कि अब भी बताया, कि वो उसकी तकलीफ़ के मुकाबले में उस किस्म के दर्द को 1000 बार भी बर्दाश्त करेगा। It seemed like a long time that she knelt there by the beach fire, afraid to move, childishly willing herself to awake from the nightmarish feeling that gripped her. Page 50. ये बहुत लंबा वक्त लग रहा था कि वो वहाँ पर साहिल की आँख के ऊपर झुकी हुई थी, हरकत करने से डरती रही और बिल्कुल बच्चों की तरह उन खौफनाक एहसासात से बेदार होने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने उसको घेर लिया था। He took her hand and pulled her to her feet and they started walking up the beach slowly, not toward the group of people digging clams but in other direction, toward the jagged pile of rocks that jutted out into the bay. उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उससे खड़ा कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल के साथ साथ चलने लगे, उन लोगों की तरफ नहीं जो घोंघों के सीप खोद रहे थे, बल्कि दूसरी जानब नोकदार चट्टानों की तरफ जो कि साहिल की तरफ बाहर निकले हुए थे। She heard a strange voice, her own voice. I thought you wanted to talk to me about school, but it isn't that, is it, father? His fingers tightened around hers. In a way it is about school. उसने एक अजीब आवाज़ सुनी, उसकी अपनी आवाज़। मेरा ख्याल था कि तुम मुझसे स्कूल की बात के बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या ऐसा ही है बाप? उसने उसकी उंगलियों को मजबूती से पकड़ा और कहा, इस तरह ये स्कूल से मुतल्लिक बात थी। And then before the feeling of relief could erase that fear, he went on. I went to see Dr. Morton last week, Minta. I have been seeing him pretty regularly these last few months. She flashed a quick frightened look up at him. You aren't ill. और फिर उससे पहले कि सुकून का एहसास खौफ को ख़त्म कर दे उसने बात जारी रखी। मिंटा में गुज़श्ता हफ्ते डॉक्टर मॉर्टन से मिलने गया। गुज़श्ता चंद महीनों में मैं काफ़ी बाकायदगी से उससे मुलाकात करता रहा। पेज 51। उसने जल्दी से खौफ के आलम में उसकी तरफ देखा। तुम तो बीमार नहीं हो? नो, he sighed, and it was heartbreaking sound. No, it isn't me. It's your mother. That's why I don't want you to go to Maryhill this year. But she's feeling so much better, Dad. Except for these headaches once in a while, she even taking on a little weight. She broke off and stopped walking and her hand was steady on his arm. Tell me, she said quietly. नहीं, उसने आह भरी और ये एक दिल को चीरने वाली आवाज़ थी। नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये तुम्हारी माँ है। यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस साल मैरी हिल जाओ। लेकिन डैड, अब तो वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हैं। कुछ वक्त के लिए सर दर्द के अलावा अब उसका वज़न भी बहाल हो रहा है। वो रुक गई और चलना बंद कर दिया और उसके हाथ की गिरफ्त बाप की बाजू पर कमज़ोर पड़ गई। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे बताओ। The look was back in his eyes again, but this time Minta scarcely noticed it. She was aware only of his words, the dreadful echoing finality of his words. Her mother was going to die. To die. Her mother?
उसकी आंखों में वही मंजर दोबारा आया, लेकिन इस दफ़ा मिंटा ने वो मुश्किल उसे देख लिया। उसकी तवज्जो सिर्फ अपने अल्फाज की तरफ थी, अपने अल्फाज की खौफनाक गूंजती हुई कतियत की तरफ। उसकी माँ मरने जा रही थी, मर रही थी उसकी माँ। टू डाई, द डॉक्टर सेड 3 months, perhaps less. Page 52. Her mother, who was gay and scatterbrained and more fun than anyone else in the world. Her mother, who could be counted on to announce in the spring that she was going to do her Christmas shopping early this year, and then left everything until the week before Christmas. डॉक्टर ने कहा मरेगी 3 महीनों में, शायद इससे भी कम वक्त में। उसकी माँ, जो कि खुश मिजाज, बेफिक्र और दुनिया में किसी भी शख्स से ज़्यादा खुशी का बायस थी। उसकी माँ, जो बाहर में ये ऐलान करने वाली थी कि इस साल वो पहले से ही क्रिसमस के लिए शॉपिंग करने जा रही थी और फिर क्रिसमस से 1 हफ्ता पहले तक हर चीज़ छोड़ती थी। She was so pretty and caring. She always had time for things like listening to new records and helping paste pictures in Minta's scrapbook. She wasn't ever sick, except for the headaches and the operation last year, which had laughingly dismissed as a rest cure. वो बहुत खूबसूरत और ख्याल रखने वाली थी। वो नए रिकॉर्ड सुनने को भी वक्त देती थी और मिंटा के तराशों की किताब में तस्वीर भी लगाने में मदद देती थी। वो कभी बीमार न होती थी सवाए सरदर्द के और गुज़िश्ता साल का ऑपरेशन, जिससे उसने आराम के लिए इलाज के तौर पर हंसी हंसी गुजार दिया। I shouldn't have told you. Her father was speaking in a voice that Minta had never heard from him before, a voice that held loneliness and fear and sort of angry pain. I was afraid. I couldn't make you understand why you had to stay home, why you had to have to forget about Mary Hill for this year. His eyes begged her to forgive him, and for some reason she wanted to put her arms around him as if she were much older and stronger. Page 53. मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, उसका वालिद एक ऐसी आवाज़ में बोल रहा था जो मिंटा ने उससे पहले कभी नहीं सुना था। एक ऐसी आवाज़ जिसमें तन्हाई, खौफ और एक किस्म का शदीद दर्द पाया जाता था। मुझे खौफ था कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकूँगा कि तुम्हें क्यों घर पर ठहरना था और तुम्हें इस साल क्यों मैरी हिल को भूलना होगा। उसकी आंखों ने उसे माफ़ी तलब की और फिर किसी वजह से उसने उसके गिर्द अपने बाजू डालने चाहे, गोया कि वो उससे ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा मजबूत थी। Of course you had to tell me, she said steadily. Of course I had to know. And then 3 months, but Dad, that's Christmas. He took her hand and tucked it under his arm and they started walking again. उसने मुस्तकिल मजाजी के साथ कहा, बेशक तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, बेशक मुझे जानना था। और फिर 3 महीने, लेकिन डैड फिर तो क्रिसमस है। उसने उसके हाथों में हाथ डाले और उसे अपने बाजू के नीचे दबा लिया और उन्होंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। It was like walking through a nightmare. The steady squish of the wet sand and the little hollows their feet made filling up almost as soon as they passed. ये चलना एक डरावने ख्वाब के चलने की तरह था। तर रेत के नरम नरम आवाज़ और उनके कदमों की वजह से बनने वाले छोटे छोटे गहरे घड़े जो कि उनके गुजरते ही दोबारा भर जाते थे। He talked quietly, explaining, telling her everything the doctor said, and Minta listened without tears, without comment. She watched his face as though it were the face of a stranger. She thought about 1,000 unrelated things. वो आहिस्ता आहिस्ता बोलता रहा और उसे वो सब कुछ बयान कर दिया जो कि डॉक्टर ने बताया था, और मिंटा रोए बगैर सुनती गई, आंसुओं के बगैर बोले। पेज 54। वो उसके चेहरे को इस तरह देखती थी कि गोया ये एक अजनबी का चेहरा था। वो हज़ारों गैर मुतल्लिका चीज़ों के बारे में सोचती रही। She remembered all the times they had gone swimming this past summer. Minta and her father loved to swim, but her mother had preferred to curl up on a beach and watch them. You have that disposition of Siamese cat, Minta had accused her mother laughingly. A cushion by the fire in the winter and a cushion in the sun in the summer. उसे वो तमाम औकात याद आ रहे थे जब वो गुज़िश्ता गर्मियों में तैरने के लिए गए थे। मिंटा और उसका वालिद तैरना पसंद करते थे, लेकिन उसकी माँ साहिल पर बैठकर उन्हें देखना पसंद करती थी। मिंटा हंसते हुए अपनी माँ को कहा था, तुम्हारी तबीयत सियामिस बिल्ली की तरह है। सर्दियों में आग के किनारे एक गदी और गर्मियों में धूप में रखी एक गदी। And a bowl of cream nearby, her mother had agreed instantly. She was always good-natured about their teasing. It was like coming back from a long journey when her father stopped talking and they turned back towards the car. और करीब करीम की प्याली। उसकी माँ फ़ौरन मुतफ़िक हुई थी। वो तंग करने के वक्त हमेशा अच्छे मिजाज का मुज़ाहिरा करती थी। एक लंबे सफ़र से वापसी की तरह लगता था जब उसके बाप ने बोलना बंद कर दिया और वो कार की तरफ वापस मुड़े। So that's why I can't let you go away.
Midge. Her father's voice was very low, and he didn't seem to realize that he had called her by the baby's name she had discarded when she started to first grade. It isn't just your mother I'm thinking about, it's me. I need you. बस यही वजह है कि मैं तुम्हें दूर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता मैज। उसके बाप की आवाज़ बहुत मध्यम थी और उसे महसूस न हुआ कि उसने उससे बचपन के उस नाम से पुकारा था जिसको उसने पहले ग्रेड में दाखिल होते ही मुस्तरद कर दिया था। ये सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं जिसके मतलब मैं सोच रहा हूँ, ये तो मैं खुद हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। She looked at him quickly and her heart twisted with pity. He did need her. He would need her more than ever. In the car she sat very close to him. We didn't get the clams, she reminded him once, but he only nodded. उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा और उसका दिल तरस की वजह से बीचों ताप खाता गया। बाप को उसकी बहुत ज़रूरत थी, उसे पहले से बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। कार में वो उसके करीब बैठ गई। हमने घूंगे नहीं पाए। उसने उसे सिर्फ एक बार याद दिलाया मगर उसने सिर्फ सर हिलाया। Just before they reached home, he reached over and took her hand in a tight, hurting grip. We can't tell her, Minta. The doctor left it up to me and I said not to tell her. We have to tell her, have this last little time without that hanging over her. We have to go on as if everything were exactly the same. घर पहुंचने से थोड़ा पहले उसने भड़कर उसका हाथ मजबूती से थामा। मिंटा, हम उसे नहीं बता सकते। डॉक्टर ने मुझ पर छोड़ा और मैंने उसे बताया कि उसे नहीं बताना है। हमें उसे ये आखिरी वक्त गुजारने देना है, ये आखिरी थोड़ा सा वक्त मौत को उसके ऊपर लटकाए बगैर। पेज 56। हमें ऐसा रवैया अपनाना है कि गोया हर चीज़ बिल्कुल पहले की तरह है। She nodded to show that she understood. After a moment she spoke past the ache in her throat. About school, I will tell her that I'll decide to wait until next year. उसने सर हिलाते हुए बताया कि उसे समझ आई। उसने दर्द भरे आवाज़ से कहा, स्कूल से मुतालिक मैं उसे बताऊंगी कि मैंने अगले साल तक इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। It seemed impossible that life could go on exactly as before. The small private world peopled by the three of them was as snug and warm and happy as though no shadow had touched them. They watched television and argued good-naturedly about the programs. Minta's friends came and went and there was the usual round of parties and games. ये नामुमकिन दिखाई देता था कि ज़िंदगी पहले की तरह गुजर सकेगी। एक छोटी ज़ाती दुनिया जिसमें 3 लोग रहते थे ऐसा महफूज, आरामदायक और गर्म और खुश था कि शायद किसी साए ने इसको छुआ नहीं था। वो टीवी देखते रहे और फिर प्रोग्रामों से मुतल्लिक़ अच्छे तरीके से दलाइल देते रहे। मिंटा की सहेलियाँ आईं और गईं और पार्टियों और खेलों के अमूमी दौर होते रहे। I really must get at my Christmas shopping, she mentioned the day she was wrapping trick or treat candy for Halloween. Minta shook her head and sighed gustily. Her mother started this I must get at my Christmas shopping routine every spring and followed it up until after Thanksgiving, but she never actually got around to it until 2 or 3 days before Christmas. Page 57. वाकई मुझे क्रिसमस के लिए शॉपिंग करना चाहिए। उसने उस दिन का जिक्र किया जिस दिन वो हॉलोवीन के लिए ट्रक और ट्रीट कैंडी बंद कर रही थी। मिंटा ने अपना सर को झुका दिया और खुद जोश के साथ आहें भरी। उसकी माँ हर बहार के मौसम में क्रिसमस शॉपिंग की रूटीन शुरू करती थी और शुक्राने के बाद तक इसको जारी रखती थी, लेकिन वो कभी भी क्रिसमस से 2 या 3 दिन पहले तक इस पर अमल नहीं कर पाती थी। It was amazing that Minta could laugh and say, "Oh, you," the way she did year after year. It was a knife turning in her heart when her mother straightened up from the gay cellophane-wrapped candies and brushed a stray wisp of taffy-colored hair back from unflushed cheek. "Don't laugh," she said, pretending to be stern. "You know you are just exactly like me." ये हैरानकुन था कि मिंटा हंसकर बोल सकी और वो ओह तुम जिस तरह वो साल ब साल ऐसा करती थी, ये उसके दिल में छुरा घोंपने के बराबर था। जब उसकी माँ सेलोफोन में लिपटी खूबसूरत टॉफ़ियों से उठी और अपने सुर्ख गालों से टॉफ़ी के रंग के बालों को लच्छा हटा दिया, उसने कहा, मत हंसो सख्ती का इज़हार करते हुए, तुम जानते हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। It was warming though. She was like her mother. Inside, where it really mattered, she was like her mother, even though she had her father's dark eyes and straight black hair, even though she had his build and the firm chin of all the Hollies. अगरचा ये गर्मजोशी थी, वो अपनी माँ की तरह थी, अंदर से अपनी माँ की तरह थी। अगरचा उसकी आंखें बाप की आंखों की तरह स्याह थीं और सीधे स्याह बाल, अगरचा जिस्म और थोड़ी
सारे हॉलिस की तरह सख्त थी। She wanted to put her arm around her mother and hug her hard. She wanted to say, I hope I am like you. Page 58. I want to be. But instead she got up and stretched and wrinkled her nose. Perish forbid, she said, that I should be such a scatterbrain. She was rewarded by the flash of a dimple in her mother's cheek. वो माँ के गिर्द बाजू डालकर उसे सीने से लगाना चाहती थी। वो कहना चाहती थी, मुझे उम्मीद है मैं तो आपकी तरह हूँ और मैं ऐसा होना भी चाहती हूँ। लेकिन बजाय इसके वो उठी और उसकी नाक को झटका दिया और उसने कहा, ऐसा सोचो भी मत कि मुझे भी ऐसा बेफिक्रा होना चाहिए। माँ के गालों पर पड़ने वाले गहरे घड़े की चमक ने उसे जवाब दिया। इट सीम्ड टू मिंटा एज वीक फॉलोड वीक that the day at the beach had been something out of a nightmare, something that she could push away from her and forget about. Sometimes she looked at her father laughing, teasing them or howling about the month-end bills and she thought, it didn't happen, it isn't true. जब हफ्तों के गुजरने के बाद मिंटा को ऐसे दिखाई दिया कि साहिल का वो दिन एक डरावने ख्वाब की तरह था। वो एक ऐसी चीज़ थी जिसको खुद से दूर करके भुलाया जा सकता था। बाज़ औक़ात वो बाप की तरह देखती थी, हंसते हुए और उनकी तंग करते हुए और या महीनों के बिलों के बारे में कुछ कहते हुए, और उसका ख्याल था कि ऐसा नहीं हुआ, ये सच नहीं है। And then at night she would lie sleepless in her room, the pretty room that had been converted from her nursery. She watched the moonlight drifted patterns across the yellow bedspread and the breeze below the curtains that her mother had made by hand, because that was the only way she could be sure of an absolute match. Page 59. और फिर रात को वो बेख्वाबी की हालत में कमरे में पड़ी रहती। खूबसूरत कमरा जो उसकी परवरिश गाह से दोबारा असली हालत में तब्दील कर दिया गया था। वो चांद की रोशनी के मुतहरिक नक्शों को जर्द कंबल में से देखती थी और उन पर पर्दों को हरकत देती थी जिनको माँ ने अपने हाथ से बनाए थे, क्योंकि यही एक मुकम्मल तौर पर बराबर रंग देखने का वाहिद तरीका था। येलो इज़ सच अ डिफ़िकल्ट कलर टू मैच, शी हैड एक्सप्लेन्ड राउंड माउथफुल ऑफ पिंस. And in the dark hours of the night, Minta had known it wasn't a nightmare. It was true. It was true. पीला रंग मैच करने के लिए एक मुश्किल रंग है, उसने पेनों से भरे मुंह के साथ वजाहत की थी। और रात के तरीक औकात में मिंटा को इल्म था कि ये एक डरावना ख्वाब नहीं था, ये एक हकीकत थी। Only windy November day she hurried home from school and found her mother in the yard raking leaves. She wore a bright handkerchief over her head and she had Minta old polo coat belted around her. She looked young and gay and carefree and her eyes were shining. नवंबर के एक तूफ़ानी दिन वो स्कूल से घर आई तो उसकी माँ को सहन में पत्ते इकट्ठे करते हुए पाया। उसने सर के ऊपर चमकीला कपड़ा डाला हुआ था और मिंटा को पोलो कोट अपने गिर्द बांधा था। वो जवान खुश और बेपरवाह दिखाई देती थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। हाय, शी वेव द रेक इनवाइटिंगली, चेंज योर क्लोथ्स एंड कम हेल्प, वील हैव अ स्मच पार्टी इन द एली। हाय, उसने शौक से रैक को लहरा कर कहा, अपने कपड़े बदलो और मेरी मदद के लिए आओ। पेज 60. हम गली में आग जलाने की पार्टी करने जा रहे हैं। Minta stopped and leaned on the gate. She saw with an awareness that there were dark circles under her mother's eye and that the flags of color in her cheeks were too bright, but she managed a chuckle. मिंटा रुकी और गेट पर झुक गई। देखकर उससे आगाही हासिल हुई कि उसकी माँ की आंखों के नीचे से गोल लकीरें थीं और उसके गालों में मौजूद रंग बहुत वाज़ेह थे, लेकिन उसने चेहरों पर हंसी लाने की कोशिश की। आई विश यू कुड सी योर सेल्फ मॉम, फॉर 2 cents आई हैड गेट माई कैमरा एंड टेक अ पिक्चर ऑफ यू। शी रैन इन टू हाउस एंड गॉट हर कैमरा एंड दे टुक अ होल रोल ऑफ पिक्चर्स। काश तुम खुद को देख सकती, वो 2 सेंट के लिए मैं अपना कैमरा लेकर तुम्हारी तस्वीर खींचूं। वो भाग कर घर के अंदर गई और अपना कैमरा लेकर आई और उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें खींची। Good, her mother said complacently. Now we can show them to your father the next time he accuses me of being a Sally. Sit by the fire. They piled the leaves into a huge damp stack. With the help of half a dozen neighborhood children, it would not burn properly but give out with clouds of thick, black, wonderful, pungent smoke. उसकी माँ ने इत्मीनान के साथ कहा, अब हम ये तुम्हारे बाप को दिखा सकते हैं। अगली दफ़ा जब वो मुझे आग के पास बैठी हुई सैली करार दें। उन्होंने पत्तों को जमा करके एक ढेर बना दिया पड़ोस के निस्फ दर्जन बच्चों की मदद से। ये अच्छे तरीके से नहीं जलेंगे, बल्कि ये बहुत भारी स्याह और तेज़
बू वाला धुआं पैदा करेंगे. Her mother was tired that night. She lay on the Davenport and made out her Christmas card list. Page 61. While Minta and her father watched the wrestling matches, it was like 1,000 other such evenings, but in some unaccountable way it was different. उसकी माँ उस रात थकी हुई थी. वो डेवनपोर्ट बड़े सोफे पर लेट कर क्रिसमस कार्ड्स की फहरिस्त बना रही थी, जबकि मिंटा और उसका बाप रेसलिंग मैच देख रहे थे. लेकिन ये दूसरे 1000 शामों की तरह एक शाम थी, मगर फिर भी एक तरह उनसे बहुत मुख्तलिफ भी थी. Because it's the last time, Minta told herself, the last time we'll ever rake the leaves and make a bonfire in the alley. The last time I'll snap a picture of her with her arms around the Kelly's kid. The last time, the last time. Minta ने दिल में कहा, क्योंकि ये आखिरी शाम है, आखिरी दफ़ा जबकि हम पत्ते इकट्ठे करके गली में आग जलाएंगे, और आखिरी बार मैं उसकी तस्वीर लूँगी और उसके बाजू कैली के बच्चों के गिर्द होंगे. आखिरी बार, आखिरी बार. She got up quickly and went out into kitchen and made popcorn in the electric popper, bringing a bowl to her mother first, remembering just the way she liked it, salt and not too much butter. वो जल्दी से उठी और निकलकर किचन चली गई और बिजली से चलने वाले पापड़ से मकई के फल्ले तैयार करके ले आई. पहले अपनी माँ को एक प्याला पेश कर दिया, ये याद करते हुए कि वो इस तरह पसंद करती थी, नमक के साथ और ज़्यादा मक्खन के साथ नहीं. But the night she wakened in the chilly darkness of her room and began to cry softly, her head buried in the curve of her arm. At first it held, loosening the tight bands about her heart, washing away the fear and the loneliness. But when she tried to stop, she found that she couldn't. Great racking sobs shook her until she could no longer smoother them against her pillow. Page 62. And then the light was on and her mother was there, bending over her face concerned, her voice soothing. लेकिन उस रात वो अपने कमरे में बहुत तारीकी में उठी और चलाने लगी, और उसका सर उसके बाजू में रखा हुआ था. पहले तो उसने उसके दिल की तेज़ धड़कनों को मद्धम कर दिया और खौफ और तन्हाई को मिटा दिया, मगर जब उसने चलाना बंद करने की कोशिश की तो वह ऐसा ना कर सकी. बहुत शदीद सिसकियों ने उसे हिला कर रख दिया, यहाँ तक कि वो उसे अपने तकिए के साथ दबाने में नाकाम रही. और फिर रोशनी हुई और उसकी माँ उसके ऊपर झुकी हुई थी. उसका चेहरा फिक्रमंद और उसकी आवाज़ तसल्ली देने वाली थी. डार्लिंग, व्हाट इज़ इट? Wake up, baby. You are having a bad dream. No, it is not a dream. Minta choked. It's true. The thin hand kept smoothing back her tumbled hair, and her mother went on talking in the tone she had always used to comfort a much smaller Minta. प्यारी बेटी, ये क्या है? बिदार हो जाओ, तुमने बुरा ख्वाब देखा है. मिंटा ने मुश्किल हल्क से आवाज़ निकलते हुए कहा, नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है. पतले हाथ ने उसे अपने बेतरतीब बालों को ठीक कर रही थी, और उसकी माँ एक ऐसे लहजे में बोल रही थी जो वो हमेशा छोटी मिंटा को खामोश करने के लिए इस्तेमाल करती थी. She was aware that her father had come to the doorway. He had said nothing, just stood there watching them, while Minta sobbed diminished into hiccuping sighs. उसे इल्म था कि उसके बाप दरवाजे तक आया था. Page 63. उसने कुछ न कहा, सिर्फ वहाँ खड़े होकर उनको देखता रहा, जबकि मिंटा की सिसकियाँ कम होकर हिचकियों में तब्दील हो गईं. Her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder and gave her a little spark. The idea gollywogs at your age, she said reprovingly. Want me to leave the light on in case your spook comes back? उसकी माँ ने मिंटा के कंधों पर कंबल डालकर दुरुस्त किया और उसे थोड़ी सी थपकी दी. उसने मलामत के अंदाज से कहा, तुम्हारी उम्र की छोटी गुड़िया चाहती है कि मैं लाइट को ऑन छोड़ दूं कि अगर तुम्हारी जिन वापस आ जाएं. Minta shook her head, blinking against the tears that crowded against her eyelids, even managing a wobbly smile. She never cried again, not even when the ambulance came a week later to take her mother to the hospital. मिंटा ने अपना सर हिलाया. उसने पलक झपका कर जमा आंसुओं को साफ किया, यहाँ तक कि एक कमज़ोर और मुस्कुराहट इजहार भी किया था. वो फिर भी कभी नहीं चलाई, बल्कि उस वक्त भी नहीं जब एक हफ्ता बाद उसकी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आया. Not even when she was standing beside her mother's high white hospital bed, holding her hand tightly, forcing herself to chatter of inconsequential things. हत्ता कि उस वक्त भी नहीं चलाई जब वो अस्पताल में माँ के बेड के करीब खड़ी थी, उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए, ख़ुद को गैर अहम चीज़ों से मुतल्लिक बोलने पर मजबूर करते हुए. Page 64. Be sure that your father takes these vitamin pills, won't you, Minta? He's so careless unless I am there to keep an eye on him. I'll watch him like a beagle. Minta promised lightly. Now you behave yourself and get out of here in a hurry. You hear? Not even at
द फनरल। मिंटा, ये यकीन कर लो तुम्हारा बाप अपना विटामिन की गोलियां ले रहा है, ये बहुत खैर मोहतात है, यहाँ तक कि उस पर नज़र रखने के लिए मैं वहाँ मौजूद हूँ। मिंटा ने वादा किया और उस पर खड़ी नज़र रखेगी। अब तुम ठीक तरीके से बात करो और जल्दी से यहाँ से निकलो, तुम सुनते हो, यहाँ तक कि जनाजे पर भी नहीं। The friends and relatives came and went, and it was as if she stood on the sidelines watching the Minta, who talked with them and answered their questions, as if her heart was encased in a shell that kept it from breaking. दोस्त और रिश्तेदार आते और जाते गए और ऐसा दिखाई देता था कि गोया साइड पे खड़ी मिंटा को देख रही थी, जिसने उनकी बातें की और उनके सवालों के जवाब दिए। ऐसा दिखाई देता था कि गोया उसका दिल एक खोल में बंद है जो उसे टूटने से बचाता है। She went to school and came home afterwards to the empty house. She tried to do things her mother had done, but even with the help of well-meaning friends and neighbors, it was hard. She tried not to hate the people who urged her to cry. वो स्कूल चली गई और बाद में खाली घर लौटी। उसने कोशिश की कि वो काम कर दे जो उसकी माँ ने किए थे, मगर काफ़ी दोस्तों और पड़ोसियों की मदद से भी ऐसा करना मुश्किल था। वो कोशिश करती थी कि उन लोगों से नफ़रत ना करे जो उसे चीखने पर मजबूर करते थे। Page 65. You will feel better, dear, her aunt Grace had insisted, and then had lifted her handkerchief to her eyes and walked away when Minta had only stared at her with chilling indifference. प्यारी बेटी, तुम बेहतर हो जाओगी, उसकी चची ने इसरार किया था और फिर अपना रुमाल आंखों तक उठाकर दूर चली गई थी जब मिंटा ने अफसरदा कर देने वाले बेएतनाई के साथ उसकी तरफ देखा था। She overheard people talking about her mother. She never knew, did she? They asked. वो लोगों को उसकी माँ के बारे में बातें करते हुए सुनती थी। वो पूछते थे, वो नहीं जानती थी, क्या उसे पता था? And always Minta's father answered, no, she never knew. Even at the very last, when she was waiting for the ambulance to come, she looked around the bedroom and said, I must get these curtains done up before Christmas. और मिंटा का वालिद हमेशा ये जवाब देता था, नहीं, उससे बिल्कुल इल्म नहीं था। यहाँ तक कि बिल्कुल आखिर में जबकि वह एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रही थी तो उसने कमरे में इर्द गिर्द देखते हुए कहा, मुझे क्रिसमस से पहले ये पर्दे ज़रूर मुकम्मल करने हैं। मिंटा knew that her father was worried about her and she was sorry, but it was as if there were a wall between them, a wall that she was too tired to surmount. मिंटा जानती थी कि उसका बाप उसके बारे में फ़िक्रमंद है और उसे अफसोस था, मगर गोया उनके दरमियान एक दीवार हाइल थी। वो इतनी थकी थी कि उसको पार नहीं कर सकती थी। One night he came to the door of her room where she was studying. I wonder if you'd like to go through those clothes before your aunt Grace takes them to the church bazaar. Page 66. He began haltingly, and then when she looked up at him, not understanding, he went on gently. Your mother's clothes. We thought someone might as well get some good out of them. एक रात वो उसके कमरे के दरवाजे तक आया जहाँ पर वो मुताला कर रही थी। मैं सोचता हूँ कि क्या तुम इन कपड़ों को देखना चाहोगी उससे पहले कि तुम्हारी चची ग्रेस उन्हें चर्च बाजार ले जाएं। उसने पसो पेश के साथ बोलना शुरू किया और फिर उसने बाप की तरफ नजर उठाकर देखा। ना समझते हुए वो मध्यम लहजे में बोलता गया, तुम्हारी माँ के कपड़े, हमारा ख्याल था कि शायद कोई और भी से कुछ फ़ायदा ले। She stood up and closed the book and went past him without another word, but she closed the door behind her when she went into her mother's room. There were some sweet boxes by the closet door, and Minta vaguely remembered that the woman from the bazaar committee had called several times. वो खड़ी हो गई और किताब बंद करके खामोशी के साथ उसके पास चली गई, लेकिन वो अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके माँ के कमरे में चली गई। अलमारी के दरवाजे के पास कुछ संदूकें पड़ी हुई थीं। वो मिंटा को थोड़ा थोड़ा याद था कि बाज़ार की कमेटी की खातून ने कई बार कॉल किया था। Her hands felt slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawer and looked down at the stacks of clean handkerchiefs, the stockings in their quilted satin cases, the gloves folded into tissue wrappings. जब उसने कपड़ों का ऊपर वाला दरवाज़ा खोला तो उसके हाथ मुतज़लज़ल हुए। उसने साफ़ रुमालों के ढेर, सैटिन केस में रखे मोटे जराबों और टिश्यूओं में लपटे ग्लव्स, दस्तानों की तरफ देखा। Page 67. I can't do it, she told herself, but she got a box and started putting the things into it, trying not to look at them, trying to forget how delighted her mother had been with the pale green slip, trying not to remember. मैं ये नहीं कर सकती, उसने दिल में कहा, लेकिन उसने एक बॉक्स लिया, उसमें चीज़ें रखना शुरू कर दिया, उन्हें ना देखने की कोशिश करते हुए और ये बात भूलने की कोशिश करते हुए कि उसकी माँ ने इसे हल्की सब्ज़ लहंगे पर कितनी खुशी का इज़हार किया था, याद न करने की कोशिश करते हुए।
Once she hesitated and almost lifted a soft wool sweater from the pile it was growing in the suit box. She had borrowed it so often that her mother used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. She didn't mean it though. She loved having Minta borrow her things. एक बार वो हिचकिचाई और सूट बॉक्स के अंदर पड़े ढेरे से एक नरम ऊन का स्वेटर उठाया. उसने स्वेटर को इतनी दफ़ा मुस्तार लिया था कि उसकी माँ अक्सर शिकायत करती थी कि हर बार मांगते हुए वो हर दफ़ा ख़ुद को मुजरिम तस्वर करती है. अगरचे उसका मतलब ये नहीं था. मिंटा को उसकी चीज़ें मुस्तार लेना उसे पसंद था. मिंटा पुट द स्वेटर विद अदर थिंग्स एंड क्लोज द बॉक्स फर्मली. नाउ द थिंग्स इन द क्लोजेट. मिंटा ने दूसरी चीज़ों के साथ स्वेटर रखा और संदूक मजबूती से बंद कर दिया. अब अलमारी में रखी हुई चीज़ें. Opening the door was almost like feeling her mother in the room beside her. A faint perfume clung to the most of her garments, the house coat, the woolly robe, the tan polo coat, the scarlet jacket, her new blue wool with the peg-top skirt. Page 68. दरवाज़ा खोलना उसके लिए कमरे में उसकी माँ की मौजूदगी के एहसास की तरह था. उसके कपड़ों पर हल्की खुशबू लगी हुई थी. उसका घरेलू कोट, ऊन से बना चुका लंबा ओवरकोट, सुर्ख जैकेट, उसकी नीली ऊन का लिबास ऊपर खुले और नीचे से तंग स्कर्ट के साथ. मिंटा स्टार्टेड फोल्डिंग द थिंग्स विद ऑलमोस्ट फ्रेंटिक हेस्ट, stuffing them into boxes, cramming the lids on and then starting on another box. मिंटा ने बहुत जुनूनी जल्दी के साथ चीज़ों को लपेटना शुरू कर दिया. संदूकों में उन्हें रखते हुए भरे हुए संदूकों के ढक्कनों को खुला छोड़कर फिर दूसरा बॉक्स शुरू करती थी. At the very back of the closet were the 2 pieces of matched luggage that had been her mother's last birthday gift from her father. They were heavy when she tried to move them, too heavy. अलमारी की पुष्ट में एक जैसे सामान की 2 चीज़ें रखी हुई थीं जो कि उसके बाप की तरफ से उसकी माँ के लिए आखिरी बर्थडे का तोहफा थी. वो भारी थी. जब उसने उन्हें हिलाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा भारी. She brought them out into the room and put them side by side on her mother's bed. Her breath caught in her throat when she opened them. वो उन्हें कमरे में लेकर आई और माँ के बेड में इन्हें साथ साथ रखा. जब उसने उन्हें खोला तो उसकी सांस गले में अटक कर रह गई. Dozen and dozen of boxes, all tied with bright red ribbon. The gift tags written out in her mother's careful script. Gaily colored Christmas stickers, sprigs of holly to Minta from mother and dad, to Grace from Mary, to John from Mary, to the Kelly Gremlins from Aunt Mary, to Uncle Art from the Hollis family. दर्जनों संदूक थे. तमाम के तमाम चमकीले सुर्ख रंग के रिबन से बंधे हुए थे. उन पर माँ के हाथों के लिखे लेबल लगे हुए थे. खूबसूरत रंगों वाले क्रिसमस स्टिकर्स. माँ और बाप की तरफ से मिंटा के लिए राज दरख्त की टहनियाँ, मैरी की तरफ से ग्रेस के लिए, मैरी की तरफ से जॉन के लिए, आंट मैरी की तरफ से कैली ग्रैमल्स के लिए, हॉले के ख़ानदान की तरफ से अंकल आर्ट के लिए. So you knew. Minta whispered the words. You knew all the time. She looked down in the surprise as hot tear dropped on her hand and she dashed it away almost impatiently. Minta ने सरगोशी करते हुए कहा, तुम हर वक्त जानते हो. जूं ही उसके हाथ पर गर्म आंसू का कतरा गिरा तो उसने हैरानगी से उसे देखा और उसने बेकरारी से उसे नीचे गिरा दिया. She picked up another package and read the tag to Minta from mother with love. उसने एक दूसरा डब्बा उठाया और लेबल पढ़ा. मिंटा के लिए, माँ की तरफ से मोहब्बत के साथ. Without opening it, she knew that it was a picture frame and she remembered the way she had teased her mother to have a good photograph taken. खोले बगैर वो जानती थी कि ये एक तस्वीरी फ्रेम है और उसे याद आया कि किस तरह उसने एक अच्छी तस्वीर के लिए माँ को परेशान कर दिया था. The only one I have of you looks like a fugitive from a chain gang, she had pointed out. I can't very well go to school next year with that. तुम्हारी वाही तस्वीर जो मेरे पास है वो सज़ा याफ्ता मुजरमों की गिरोह के एक भगोड़े की तस्वीर लगती है. पेज 70. उसने निशानदेही की थी मैं उस तस्वीर के साथ अगले साल स्कूल नहीं जा सकती. She put the package back in the suitcase with all the others and carried the cases back into the closet. Poor dad, she thought. उसने डब्बा वापस सूटकेस में रखा दूसरी चीज़ों के साथ और 7 डब्बे वापस अलमारी तक ले गई. उसने सोचा, बेचारा डैड. She never knew she could hear him saying, not even at the last. Minta opened the box beside the bed and took out the sweater and the pale green slip. वो कभी भी नहीं जानती, वो उसे कहते हुए सुन सकती थी. यहाँ तक कि आखिर तक भी मिंटा ने बेड के साथ बॉक्स को खोल दिया और उससे स्वेटर और हल्के सब्ज रंग का लहंगा निकाल दिया. You know perfectly well that you are just exactly like me, she remembered her mother saying. She brushed the tears away and went down the stairs and out in the cheerless living room.
तुम बहुत खूब जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। उसे उसकी माँ की बात याद आई। उसने आंसू साफ कर दिए और सीढ़ियाँ उतरकर वो बाहर उदास दीवान खाने में चली गई। I had liked to skip these things, Dad, she said in her most matter-of-fact voice, and she showed him the sweater and slip. The slip is a little big, but I'll grow into it. It looks like her, I think. Dad, मैं इन चीज़ों को अपने पास रखना चाहती हूँ, उसने एक गैर जज्बाती अंदाज में कहा, और उसने उसे स्वेटर और लहंगा दिखा दिया। ये लहंगा थोड़ा बड़ा है, मगर मैं बड़ी हो जाऊँगी तो ये मुझ पर ठीक आएगी। मेरा ख्याल है कि ये उसकी तरह दिखाई देती है। She went around the room, snapping on the lamps, turning on the television that had been silent for so long. She was aware that his eyes followed her, that he could hardly avoid noticing the tear stains on her cheeks. वो कमरे के अंदर घूमती रही, लैंपों को तोड़ते हुए और टेलीविज़न को ऑन करते हुए, जो कि एक अरसे से खामोश पड़ा था। उससे इल्म था कि उसकी आंखें उस पर नज़र रखी हुई थी, और उसके बाद इस बात का भी उसे पता था कि वो बमुश्किल ही उसके गालों के ऊपर आंसुओं के धब्बे देखने से सिर्फ नज़र कर सकेगी। I think I'll have an apple, she said. Want one? He nodded. Sure, bring me one as long as you are making the trip. It was natural, it was almost like old times, except that the blue chair by the fireplace was vacant. उसने कहा, मेरा ख्याल है कि मैं एक सेब खाना पसंद करूँगी। एक सेब चाहते हो? उसने सर हिलाया। यकीनन, जब तुम जाओ तो मेरे लिए भी एक सेब लेकर आना। ये फितरती बात थी, ये तकरीबन पुराने वक्त की तरह था, सवाए उसके कि चूल्हे के साथ वाली नीली कुर्सी खाली थी। She went out into the kitchen hurriedly. I'll tell him that I pestered mother to do her shopping early this year, she told herself as she got the apples from the refrigerator. I'll tell him that it was my idea about the photographs. She wanted him to believe that she didn't know. वो जल्दी से निकल कर किचन की तरफ चली गई। मैं उसे बताऊंगी कि मैंने माँ को नाराज़ कर दिया कि वो इस साल पहले ही शॉपिंग करे, उसने दिल में कहा। जो ही उसने रेफ्रिजरेटर से सेब निकाले, मैं उसे बताऊंगी कि ये फ़ोटोग्राफ्स के बारे में मेरा ख्याल था। वो उससे ये बावर कराना चाहती थी कि उसे इल्म नहीं था। The vitamin pills were pushed back on her shelf. She took them out of the refrigerator and put them on the windowsill where she would be sure to see them in the morning. विटामिन की गोलियां शेल्फ में पीछे रखी हुई थी। उसने उसको फ्रिज से निकाला और उसे खिड़की के नीचे हिस्से पर रखा ताकि उसे सुबह यकीनी तौर पर देख सकेगी। When she came back into the living room, she noticed that a light in the Christmas wreath was winking on and off in Kelly's window across the street. जब वो वापस कमरे में आई तो देखा कि गली में कैली की खिड़की में क्रिसमस हार में लगी रोशनी टमटमा रही थी। I guess we should start thinking about Christmas, Dad. She tossed him an apple as she spoke and he caught it deftly. मेरा ख्याल था कि हमें क्रिसमस से मुतालिक सोचना शुरू कर देना चाहिए, डैड। उसने सेब उसकी तरफ उछाल दिया और उसने उसे होशियारी के साथ पकड़ लिया। She hesitated for just a moment and then walked over and sat down in the blue chair by the fire as if she belonged there and looked across at her father and smiled. वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई और फिर चलकर चूल्हे के पास रखी नीली कुर्सी पर बैठ गई, गोया वो वहाँ से ताल्लुक़ रखती थी, और बाप की तरफ नज़र उठाकर देखा और मुस्कराई। Comprehension. Page 73. Answer the following questions. How is the theme of From Mother with Love a universal theme present in literature across all cultures? The theme or central idea of this story is family relations and conflict resolution and responsibility. This theme is universal because it deals with the day-to-day life of our society, and such type of issues can be found in all the societies and cultures. In our daily life, we see such conflicts and issues as in this story: mother's illness, father's worries, and mental and psychological growth of a small girl, and at last for becoming a responsible lady of the house is a common observation. Question 2. Comment on the plot of the story. The story starts at a family home. It is an ordinary morning. Family members are having conversation. The story shifts to beach. Here, rising action starts and reaches the climax. Story is taking place in a home and beach. Series of events is strongly connected. It is strong enough to develop the story along, and at last we comes to ultimate end. Question 3. Identify the narrator or a speaker of the story. From Mother with Love. The narrator is the writer himself. He tells all the things about the characters to us. Most of the story is told by him, but sometimes the character talking to each other also take the plot ahead. So we can say that both the narrator and character are the speakers. Question 4. Analyze and comment on the character of Minta. The main character, Minta, she is a young and emotional girl at the beginning. She reacts emotionally to all the things happening around her. She is quite idealistic. She is too much attached to her father. She is worried for her sick mother. With the passage of time, she attains maturity and gets stronger. At least she takes on the responsibility of her whole family. Question 5.
What is the conflict in the story? How is it resolved? There are so many conflicts in the story. There is a chaos in the very beginning. We can see a conflict between Minta's dream and real life scenario. A conflict is going on between ideal world and real world. Minta is in great confusion, but she overcomes the conflicts and takes responsibilities at last as her mother, and thus all conflicts are resolved. Question 6. Where does Minta's father take her to discuss her mother's illness? Minta's father takes Minta to the beach to discuss with her the serious problems of her mother's illness and to make her ready for the things which are likely to happen in next days. Question 7. Which approach would you have preferred, deception or honesty, if you had to deal with similar circumstances like Minta's mother? In such circumstances, I would prefer honesty. She knew about her illness but faces the circumstances in a good way and handed over the responsibility to her daughter to care for her father in her absence. Question 8. How do the vitamin pills become the symbol of responsibility? Vitamin pills have a great importance in the story. It is symbol of responsibility in the sense that handing over the responsibility of giving pills to her father symbolizes the responsibility of taking care of Minta's family as a mature girl. Question 9. How did Minta change over the course of the story? Limit your answer to just 5 sentences. Minta is a small girl. First of all, she does not know about the serious illness of her mother, but when she is informed by her father, she accepts the reality. She mentally prepares herself for the coming worst situation and at last accepts her mother's death. She becomes a mature lady and takes on all the responsibilities. Question 10. Why is the blue chair significant? Explain. Blue chair signifies the power of responsibility. When Minta's mother is seriously ill and is admitted to hospital, the blue chair on which she used to sit remains empty. It means the home lacks a mature and responsible lady. When Minta at last sits on that chair, it means she accepts the whole responsibility and takes her mother's place. Explain how Minta knew that her mother accepted death. Why is it that knowledge comforting to her? When her mother handed over things to her, showing the handing over of responsibilities of the whole family, she comes to know that her mother has accepted death. This knowledge makes her ready for facing reality. Page 76. Writing suggestions. Write down the character sketch of Minta. Answer. For this answer, see question number 4. Vocabulary and grammar. Question 1. Look for the meaning of the following emotive words in dictionary. Now write the correct word for the emotions expressed in each statement. There is no house in town better than mine. Arrogant. I can't stand talking to poor people. Snobbish. My son did really well in his exam. Proud. Oh, my hair looks wonderful today. Vain. I just don't want to get out of bed today. Lazy. I will own my own business within 5 years. Ambitious. Cynthia, I understand what you are going through. Sympathetic. I'll never forget what she did to me. Vengeful. Grammar. A. Choose one of the following relative pronoun who, which, or whose to fill in the blanks. I talked to the girl whose car had broken down. 2. Mr. Nizam, who is a taxi driver, lives on the corner. 3. I live in a house in Hayatabad, which is in Peshawar. 4. This is the girl who comes from Spain. 5. That is Abrar, the boy who has just arrived. 6. Thank you very much for your email, which was very interesting. 7. The man whose father is professor forget his umbrella. 8. The children who shouted in the street are not from our school. 9. The car whose driver is a young man is from Ireland. 10. What did you do with the money which your mother lent you? B. Underline the indefinite pronoun or pronouns in the following sentences. There are a total of 10 indefinite pronouns across these 9 sentences. Then use these pronouns in your own sentences. Answer. 1. Everybody enjoys cricket match. Does anybody have the time? One student read while the other listens to him carefully. 4. Nobody knows the trouble I have seen. 5. The secret was known by few. 6. No, the secret was known by many. 7. Calculus is too hard for some. 8. Surely you recognize somebody. 9. Is there anything that I can do?